Good evening, students. Welcome back again. Hope all well, fine, safe. Last time, in last class, हमने क्या किया था? You remember? I explained you something about dimensions. So we just started with the dimensional analysis. I explained you what is a dimension. It is the fundamental quantities, powers or exponents raised to the fundamental quantities. Gives us a distinctive equation or a formula which is known as dimensional formula. Now when we talk about the dimensional formula, there are the symbols which you remember yesterday हमने use किया था ना, काफी सारे symbol, mass, length, temperature, all 7 if you remember. सारे के सारे all the 7 ones जो dimensionally जो भी denote किया गया है वो exactly वैसे use करना है, यानी that has to be used. Now coming to the main part. So we'll start with the dimensional properties. Now when we talk about dimensional properties, what does this exactly means? Now I'll tell you that. So first of all, let's write down dimensional formulas. Now we have, friends, two different types. One is mathematical formula. So don't get confused between a mathematical formula and a dimensional formula. That's the one thing which you have to be very, very careful. Dimensional formula, which will include the symbols like M, L, T, and all like this inside this bar bracket, so on and so forth. You have got ampere A, you have got many others too. Now mass, length, time, T for time. So how to dimensionally, I'll explain you कि dimensionally कैसे लिखना है, and mathematical तो you know. जैसे सबसे पहले let's start with area. Now area, what we write down, that is length multiplied by breadth, isn't it? It's length multiplied by breadth. So length is length. ये है mathematical formula. This is mathematical formula. This is mathematical formula. Formula. Now we have another one that is called dimensional formula. Length is L. Breadth क्या है? Again that is L only, length only. You call breadth, you say distance, you say displacement. ये सारे क्या है? They all are a type of length only. So that is L square. So area का mathematical formula, now you have to understand, area का mathematical formula is this one. And area, if you talk about dimensional formula, that is this one. So, sorry, this one.
This is not that dimensional formula. This though we can remove. So this is not that dimensional formula. So this is the mathematical formula. So two formulas given to you. One is a dimensional formula, another one is a mathematical formula. So this is the dimensional formula. So on and so forth, we can do many more. We can also do for volume. Now what will be volume? Formula again mathematical is length into breadth into height. This is mathematical formula again. So dimensional formula will be L into L into L, that comes out to be L cube. L into L into L, that comes out to be L cube. Because breadth भी L है, length भी L है, height भी L है. Clear? इस तरीके से so on and so forth. अब at times some school or somewhere initially आप लोगों को पता है कैसे इसको ऐसे ना भी लिखने दिया जाए, आपको कुछ और तरीके से लिखने दिया जा सकता है, या you might be told to write down. तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि you are learning now. आप फिर उसको ऐसे लिख सकते हो m0 to the power l to the power 2 t to the power 0. ये आया आपका एरिया का फॉर्मूला डायमेंशनल. वॉल्यूम का भी मैं आपको बता देता हूं, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं m to the power 0 l to the power q and t to the power 0. This is, but never forget ये brackets जरूर चाहिए. Never forget the bracket is very important. Bracket बिना काम नहीं चलेगा. Coming to the next, कुछ और लेते हैं. Velocity यानी speed. Speed और velocity. भाई अब तक whatever you have done in till 10 standard, आपने velocity is equal to distance upon time और speed is equal to distance upon time ही अपन बोलते हैं, right? So अब थोड़ा डिफरेंस ये है, speed is distance upon time और velocity है displacement upon time. So it is distance upon time or you can say it is displacement upon time. It's one and the same thing. बट डायमेंशनली ये सेम है. कैसे? देखो, डिस्टेंस इज लेंथ ओनली एंड टाइम इज टी, एंड टाइम इज टी. व्हाट विल दिस बी? ये बना एल टी टू द पावर -1. आ गया डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड. अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन क्या है? इट्स रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब वेलोसिटी हमने क्या निकाला है? सो एक्चुअली एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. मैथमेटिकल फॉर्मूला. वैसे ये फॉर्मूला क्या होगा? L t to the power -1 वेलोसिटी का डायमेंशन और अपॉन t टाइम का डायमेंशन. क्या हुआ? L t to the power -2. Actually this is acceleration. So I would tell you, whichever book you are using, you might have got your books. चाहे आप SL अरोरा you use, better if you use SL अरोरा, और प्रदीप्स प्रिंसिपल फंडामेंटल फिजिक्स also you can use. उसमें पूरा complete एक starting में chart given है, which you need to practice. I tell you children, important thing is that when you go home, when you go back
from this, means I mean to say when you are switching off, then when we are stopping this session, after every session, you know, आपकी revision is very important. वो revision, you know, मैंने आपको yesterday I told you many things. वो जो revision होना चाहिए ना, वो by brain होना है, not by heart. तो copy and pen should always be ready. आपने अगर velocity बोला वो भी लिखो, but handwriting matter नहीं करता. Scribble, just scribble, जल्दी जल्दी scribble करके but लिखो, you know, वो एक बहुत important factor role play करेगा बाद में. आपको कभी भूलोगे ही नहीं ये चीजें, because अभी तो now you will see and do. अब जैसे next कुछ और मैं एक दो बताता हूं, जैसे force या density. आपको याद है density का फॉर्मूला? density, अब पता है आपको density हम किससे डिनोट करते हैं? ये है रो. इसको क्या कहते हैं? रो. डू एनीवन नोज? सो दिस इज नोन एज एक्चुअली रो. सो डेंसिटी को अपन ऑलवेज इससे डिनोट करते हैं. एंड फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम. फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम. ये मैथमेटिकल फॉर्मूला. मास क्या है हमें पता है, कैपिटल एम, और ये है वॉल्यूम. सो एम एल माइनस क्यू. एम एल माइनस क्यू. नाउ क्विकली फटाफट एक और लेते हैं. फोर्स. फोर्स को अपन F से ही डिनोट करते हैं. एंड फॉर्मूला आपको पता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, ma. मास का तो मास है ही, एक्सेलरेशन का हमने कभी निकाला था LT टू द पावर -2. देखो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया. सो इसी तरीके से देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज. एनर्जी यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन. आपको पता है एनर्जी और वर्क, बात तो एक ही हुआ. एनर्जी इज व्हाट? अमाउंट ऑफ वर्क डन. और व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन? व्हाट इज वर्क डन? अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन द बॉडी. सो दीज आर वाइस वर्सा थिंग्स. बोथ आर सेम एक्चुअली. विदाउट possessing energy I can't do any work. That's the point. I mean to say physical terms में work. And in fact, biologically also that is very true. A person doesn't have energy, वो कुछ नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता. So, energy upon work, I'm so sorry, energy or work. Formula क्या था? If you remember, force into distance या force into displacement. Formula था force into distance. Now, एक point और, अब से distance और displacement को हम S से डिनोट करेंगे. डिस्टेंस का जो सिंबल है, टिल 10th या 9th तक तो आपने D लिखा था, अब D नहीं लिखोगे, आप S लिखोगे. S is a standard symbol for distance or displacement. So force into displacement. अब अपन इसको, now we need to write down dimension. फोर्स का अभी हमने ऊपर बनाया है mlt to the power -2, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक और l. सो क्या बना? ml2 t to the power -2. ml2 t to the power -2. This is energy of work. So, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो कुछ तो आपने पहले किया. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9th स्टैंडर्ड में किया है, याद आता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G. We can do that also. Gravitational constant. Gravitational constant. Gravitational constant.
So कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल G. And you know what is its formula? इसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर. ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है. गुड आफ्टरनून भावना. भावना अगेन हियर. वेलकम. सो फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर. Yeah, exactly. Good. So that is very good. So that वही वो G, that's G is equal to, okay, so that's G, तो small वाला G है, that is capital G. ठीक है, उसको change करो भावना. That is small G और capital G, those are two different meaning. Small G is acceleration due to gravity and capital G is ये वाला. Okay, so now इसका when you will write down, so what will you get? You will get force का m l t to the power minus 2. You have got L square upon capital M square. Now mathematically it is same. No, not G equals to, it is F is equal to, Bhavna. It is actually, I'll write it down. See, it is like this. F is equal to G M M upon R का square. Okay. G equal to नहीं. Okay, by my mistake it might have happened. तो उसको थोड़ा you just rectify it. ठीक है. So this, because अब देखो from here only this has come. ये R square जो actually distance का square है. Right. So that is what the thing is. So अब इसका जो now interesting thing, अब हम इसका what we will do is that इसका वो निकालना है, dimension we can find out. So dimension, how to find out dear? See, m एक m cancel हो गया. Final answer, m to the power minus 1 L cube t to the power minus 2. So ये है आपका G का dimensional formula. Good, okay. So G equals to, this is the dimensional formula for G. And in fact 12th में there are so many things जिसमें nowadays क्या है कि you know, like they can ask you. I am telling 12th students also, जो मतलब 12th में जब when you'll go, ऐसा लगता है जैसे कि 2K 11th का ना वो चैप्टर खत्म हो गया, वो तो अब आएगा नहीं. No. रेजिस्टेंस, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, सबका डायमेंशन है. बट नाउ फॉर द 11th आपको शायद वो इतना जरूरत नहीं है. आपको जो 11th पोर्शंस विच है उसके लिए दीज आर देयर. वन मोर थिंग, दिस इज नॉट न्यू. ये जी तो आपके लिए नया नहीं था. सो डायमेंशन वाज न्यू फॉर यू. बट हाँ, अब एक और चीज मैं पूछूंगा जिसको माइट बी, ये भी न्यू एक्चुअली है नहीं बट माइट बी. मोमेंट ऑफ फोर्स, ये क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, दिस इज न्यू फॉर द 11th ones. मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या कहते हैं? इसका अनदर नाम है टॉर्क, और इसको कैसे डिनोट करते हैं? टाउ. इसको डिनोट करते हैं हम टाउ से. नाउ अ फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला इज फोर्स, यानी दिस इज लीनियर फोर्स, दिस इज लीनियर फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. और ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बट व्हेन वी विल टेक द चैप्टर तब मैं समझाऊंगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है. बेटर नॉट टू से नाउ, बिकॉज क्या उसमें ये परपेंडिकुलर या पैरेलल डायमेंशन में कोई जरूरत नहीं होता. आई मीन डायमेंशनली पैरेलल या परपेंडिकुलर हम डिनोट नहीं कर सकते. टाउ, राइट, गुड भावना. सो एफ इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर. सो एफ एम एल टी टू द पावर माइनस 2 and distance का square is L का square.
So what we have ml cube t to the power minus 2. ये आ गया आपका टाउ का डायमेंशनल फॉर्मूला. नाउ एक और चीज है जो 11th में यू हैव डन, आई मीन 11th में नहीं 9th में यू हैव डन, इम्पल्स. यू रिमेंबर इम्पल्स, सडन फोर्स. नाउ अब इम्पल्स का क्या होगा? इम्पल्स इज एक्चुअली उसको कहते हैं एवरेज फोर्स अपॉन टाइम. एवरेज फोर्स multiplied by time. This is its actual formula. Right? So this, now is it absolutely clear? So force average into time. So what is average force or force? देखो, again I'll come to say everything that force either वो average हो या वो single हो, because force will be force only. Yes, ml2t minus 2, great. ठीक है? Is it absolutely? So this is force, it's ml t to the power minus 2 into t. Now ml t minus 1, you know j से डिनोट करते हैं हम इम्पल्स को, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. Is it absolutely clear? So this is what is the thing. Impulse is average force into time. So ml t minus 1. ये हो गया impulse. It is now, it was a new one. That is stress. Stress is force upon area. आपको पता है ये स्ट्रेस एक नया टर्म है जो आप पहली बार सीखोगे. Stress is force upon area, but ये force upon area is also formula for pressure. Now यानी see my dear students, you have to understand stress or pressure का mathematical formula is same, right? So stress and pressure both are same, तो इसका dimensional formula will also be same. So dimensional formula क्या हो गया? ml t to the power minus 2 upon L square. Right? So again L and L got cancelled. So you have got formula, dimensional formula for stress or pressure, both are same, and that is ml minus 1 t to the power minus 2. Right? Is it clear? F upon A. Yes. Good. Very active. That's really praisable, Bhavna, that you're always alert. That's great. I mean, thanks. So this is the again formula for ml minus 1 t minus 2. This is so what I mean to say to all my friends and student friends, that you know it's very easy, but easy कैसे? For you also बहुत easy हो जाएगा. कैसे? My request is, once the session is over, आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है. You know, dedicated time spent. मतलब टाइम तो स्पेंड वैसे ही हो जाता है. I mean, you have understood.
टाइम स्पेंड कैसे होता है, लाइक यू नो कि भाई सर ने कहा यू हैव टू स्पेंड टाइम आफ्टर सेशन इज ओवर, सो ठीक है भाई टाइम स्पेंड करना है तो बुक इज देयर एंड वो डायमेंशन थोड़ा लिख भी लेंगे, हम थोड़ा बोल भी लेंगे एंड यू नो साथ साथ थोड़ा मोबाइल भी चलेगा. सो नो, दैट इज नॉट द टाइम स्पेंड. आई वांट सम डिवोटेड टाइम स्पेंडिंग. ज्यादा नहीं, अरे यू डोंट नीड मच टाइम भाई. रिविजन, जस्ट नाउ आई सेड you might be having, आपके पास SL Aurora होगा जो new 11 days you should can buy, you please buy that book. I think that would be better for you. Numericals बहुत है, innumerable formulas है and बहुत अच्छा practice है उसके अंदर. You have got all the NCERT questions, a good one for you. बाकी rest up to you. So there is a full chart of this dimension given जो 11th तक का required है. I'll tell you नेक्स्ट टाइम, आई विल टेल यू कि कहां तक आपको क्या करना है. दिस तो आपके बहुत काम आएंगे बिकॉज दिस इज फॉर यू दिस ईयर ओनली. उसमें देयर आर न्यू मेनी टर्म्स आर न्यू, सो वो आ जाएगा. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि डायमेंशन कैसे फॉर्म होता है एंड हाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला. बट ये डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए वी हैव टू लर्न मेनी थिंग्स. ठीक है, दैट मीन्स वो मेनी थिंग क्या है, वो मेनी थिंग जस्ट एक चीज है जो मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी अलर्ट. अलर्ट इन द सेंस, जैसे देखो स्ट्रेस एंड प्रेशर बोथ हैव द सेम, वैसे बहुत है, देयर विल बी मेनी मोर टर्म्स. So, यानी you got it that it should click. यहाँ अरे this is there. How possible? By writing, simple. मैंने बोला writing, scribbling. मैं कोई मतलब no need to have a very nice handwriting से लिखने की जरूरत नहीं है. You should always carry a rough copy with you. और जब भी आप पढ़ो just you know murmur and करते जाओ. Your answer will be in front of you. Now, dear students, dimensional formula, dimensional equations, obviously when we are doing it has got some importance. First importance or first you can say application based on dimensional formula is that principle of homogeneity. Now what is this principle of homogeneity? That's the first thing which we need to understand. What is this principle of homogeneity? But before that, before starting with principle of homogeneity, I would like to tell you that there are dimensional variables also and there are dimensionless variables also. There are dimensional constants also and there are dimensionless constants also. Understand my words. When we say dimensionless variables, तो वेरिएबल्स यू नो ना जो वेरी करता है, मतलब जो एग्जैक्टली विच इज नॉट अ कांस्टेंट, विच कीप्स ऑन वेरिंग. सो व्हेन आई से डायमेंशनलेस वेरिएबल और डायमेंशनल वेरिएबल, वन थिंग इज फॉर श्योर, the variables, they are variable but they don't have any dimension. Now you might be thinking, sir, ऐसा कौन सा dimensionless variables है? I don't know if some of you know, quickly you can tell me. ऐसा कोई dimensionless variable ध्यान में आता है? Or can you tell me any dimensionless variable? So time, yes, work energy and potential energy, work energy and potential energy. Yes, exactly, Bhavna, absolutely. Not only potential energy, dear, it's about the kinetic energy, any energy. Good, done, well done. But now my question is, can you tell me dimensionless variable? Did you remember any dimensionless variable? Okay,
dimensionless variable. Angle, see, it is dimensionless. Why dimensionless? Angle is arc upon radius. Arc upon radius. Yeah, arc is also length and radius is also length. Okay, so what is that? It is arc is also length and radius is also length. So that is length upon length. So no dimension. Okay, so it is no dimension. Similarly, one more you can have, strain. ये एक नया term है. 11th students, you will learn this afterward. तो ये आपके लिए नया है, strain. Strain का मतलब होता है change in dimension upon original dimension. Change in dimension upon original dimension. Now change in dimension can be length, can be volume, can be area. ओरिजिनल डायमेंशन में भी लेंथ वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है. तो अगर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम हो गया, सो दैट विल बी चेंज, हम डेल्टा से लिखते हैं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, और चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, और चेंज इन एरिया अपॉन एरिया. तो ये देखो, ऑल आर डायमेंशनलेस. यस यस, गुड भावना, गुड गुड गुड. That comes to 1 actually. Great. Angle, great. Angle, yes, done. So, good. So, angle, strain, these are all dimensionless variable. So, there are so many. Now, dimensional variable तो already हमने किया, अभी force है, impulse है, volume, area, ये सारे dimensional variable. अब है डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनलेस कांस्टेंट. ये अब दो चीज पे हम आएंगे. सो मतलब ये सारे जो है, दीज आर डायमेंशनलेस वेरिएबल. डायमेंशनलेस वेरिएबल्स. डायमेंशनल वेरिएबल्स, दिस इज अ डायमेंशनल वेरिएबल, दिस इज अ डायमेंशन. तो ये सारे dimensional variables. Right? Up next step will go, that is what we have, dimensionless constant. That is a very important thing. We need to have some dimensionless constants. Or first we can have dimensional constant also. So, say starting with dimensional constant. Now, dimensional constants अभी किया हमने. Gravitational constant, that is called. इसका भी हमने just now we found out. And this is also small g, acceleration due to gravity. ये भी कांस्टेंट, यू नो ना, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये मैक्स है. इससे बिलो भी बहुत थोड़ा ही बिलो होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, बट दिस इज अ कांस्टेंट. बट ये डायमेंशनल कांस्टेंट है. सिमिलरली कैपिटल जी 6.67 इंटू, यू विल डू इट, 11th में आप करोगे पूरा चैप्टर, बट 9th स्टैंडर्ड में यू डिड इट, अगर इफ यू रिमेंबर. सो दिस कैपिटल जी, अगेन इट इज डायमेंशनल कांस्टेंट. सो Planck's constant. Planck's constant केमिस्ट्री में 11th स्टैंडर्ड में विल डू, 8 से डिनोट करते हैं. दैट इज ऑल्सो अ डायमेंशनल कांस्टेंट, बिकॉज ये Planck's constant और वॉट एवर दिस इज, यू नो द फॉर्मूला, इट इज एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी.
प्लैंक्स कांस्टेंट, मैं लिख देता हूं, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये डायमेंशनल है, इसको h से डिनोट करते हैं, एंड द फॉर्मूला फॉर दिस इज, and the formula for this is H equals to energy upon में frequency, frequency, yes भावना, H energy upon frequency, energy का है formula, we know that, good, Planck's constant H, perfect, perfect Bhavna, perfect. So energy upon frequency. Now what is energy? अभी पीछे किया था हमने, work done ml2 t minus 2, और frequency is time, 1 upon time t, तो t to the power minus 1. तो क्या हो गया इसका डायमेंशनल, ये कांस्टेंट है बट डायमेंशनल है. So what is this? You have got ml 2t minus 1, ml2t minus 1. So this is basically what you can say of Planck's constant. Now such a big thing, so many things we have done today. Fairly enough, fair enough, we have done. So now, but what I said, ki, yeah, work done is energy, exactly, Bhavna. Work done is energy. Or, see, good question. Just, iske pehle I was telling the same only, I mean, few moments back. Rate of doing work is energy. So obviously work done is energy. Also, work done is the amount of energy contained in the body. So both are the same. You are right. Perfect. Now, we'll come to the dimensionless constants. We'll have dimensionless constants. Now, what is this dimensionless constants we have? Now, that is one thing which we have to do. So, see, dimensionless constants ke liye bhi we can do dimensionless constant. Now, there are so many dimensionless constants, but they are dimensionless. Now, what are those dimensionless constants which you can have in your terms? Like the value of pi. Pi is a constant, but it does not have any dimension. Biggest example, pi. These are all dimensionless constants. Pi, 2, 3, 1, 4. Well, these are constant. 3 is obviously a constant figure. And that figure does not have any dimension. Or it does not have any dimension. Existence, dimensional existence. Don't think that it has got no existence. It has an existence. 3, 4, 2, pi. They all exist. But dimensionally, they don't exist. That's what I mean. So, this is the basic things which we have done. There are so many applications which we have to understand about this. The applications one by one we will do, and that we will take up again in the next session. But do practice all these formulas, dimensions. You can take help from your book. And what is written, Bhavna? ROH, rho, ROH is rho. This is the symbol of density. ऐसे लिखते हैं. This is how we write down, Bhavna. Rho is this. This is rho, density. Okay.
So tomorrow or next session we'll meet again. Till then, do practice, stay safe, and bye-bye.